Hello friends, today we are going to discuss the paper of National Accounting जो कि relevant है for the student of BCom second semester. तो there are three section. Section A के अंदर जो first question है that is numerical. S Limited has a hire purchase department. Goods are sold on hire purchase at a profit of 25% on sale price. From the following particular, prepare hire purchase trading account in the books of S Limited for the year up to 31st March 1999. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है 1 अप्रैल 2018 और 31 मार्च 2019 की वैल्यू जो है दी हुई है. So stock in the shop, installment due, stock with customer at high purchase price. During the year ended 31st 3/19, goods sold on high purchase at high purchase price rupees 1,76,000, purchase 1,36,000, cash receipt 1,60,000. इसी तरह ही क्वेश्चन 2 जो है that is again numerical. A of Agra consigned 100 units of commodity to D of Delhi. Goods were invoiced at rupees 150 per unit so as to yield a profit of 50% on cost. A incurred rupees 1,000 on freight and insurance. B incurred rupees 500 on freight and rupees 800 on rent. Before December 31st, 2018, he sold 50 units for cash at rupees 160 per unit and 20 units on credit for 170 rupees per unit. He retained his commission at 5% and 1% dealt credit on all sales and remitted the balance on December 31st, 2018. D noticed that 10 units were damaged on account of bad packing and could sell them only for rupees 80 per unit. A debtor of rupees 1,000 to whom the goods were sold on credit became insolvent. Only 50% rupee could be recovered. Prepare necessary ledger account in the books of A and D. उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है थ्योरेटिकल है. Number 3, what are the different methods of recording the transaction relating to joint ventures? What do you mean by hire purchase system? How would you determine the profit earned by the hire purchase vendor? तो यहाँ से आपको करने हैं 2 क्वेश्चन. सेक्शन बी के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. X Limited Bombay has a branch at Delhi. The branch remittance of all goods and head office and remit all cash received into head office bank account and Delhi branch expenses are paid direct from the head office. From the following particulars, prepare Delhi branch account in the books of head office for the year ended 31st March 2019. Stock at cost as on 1st April 18 दिया हुआ 1,78,000. डेटर दिए हुए हैं 1 अप्रैल 18,000, 14,000. क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट दिया हुआ है 1,54,000. क्लोजिंग डेटर्स दिए हुए हैं 31st मार्च 19. और उसी तरह पैटी कैश दिया हुआ है. गुड्स सेंड टू ब्रांच दी हुई है. गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू द हेड ऑफिस एट कॉस्ट. गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर टू ब्रांच. कैश पेड बाय द कस्टमर. पैटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है. डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, रिटर्न ऑफ कैश सेल भी दी हुई है. Expenses incurred by the brand salary 30,000, rent 12,000, petty expenses 8,000. Any difference in branch stock is to be treated as goods lost in transit against which a claim loss of was recovered. All sales were made by branch at the cost plus 50%. Question number 6. Dauber Limited has 3 departments and submit the following information for the year ending. XYZ 3 डिपार्टमेंट है. परचेजिंग यूनिट तीनों की दिया हुआ है. परचेजिंग अमाउंट दिया हुआ है. टोटल सेल यूनिट दिए हुए हैं. सेलिंग प्राइस दी हुई है. क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट दिया हुआ है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ डाबर लिमिटेड. एज्यूम द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल इज यूनिफॉर्म इन ईच केस. क्वेश्चन नंबर 7 जो है थ्योरेटिकल है. व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस शीट? हाउ बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड इन टैली ERP. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8. Differentiate between a manual and computerized accounting system. What advantages does computerized accounting system have over the manual accounting system? तो यहाँ से आपको करने हैं 2 क्वेश्चन.
सेक्शन सी जो है डेट इज कंपल्सरी क्वेश्चन एंड वेरी स्कोरिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। 9 क्वेश्चन है, इसमें से आपको करनी है 10। डेटा रिलायबिलिटी, इन्वेंट्री मास्टर, ऑप्शनल वाउचर्स, पोस्ट डेटेड वाउचर्स, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर विद co-venture account, losses in transit, del credit commission, interest suspense account, partial reposition, deletion of group in Tally.